Normally we record this. हम्म सो आपका थोड़ा बैकग्राउंड आप देख के रखो दुरुजिश, कि क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या कर रहे हो आप अभी, और आपका करंटली क्या ट्राई कर रहे हो जिसमें कि आपको हेल्प चाहिए ताकि। Mhm. I am currently at Rajkot, Gujarat, and I have completed my diploma ICT at Marwad University in 2024, and I have done a diploma engineer trainee at Shaktiman Agro for 7 months, and recently I am finding a new job or opportunity. ओके, गुड। सो अभी Yes. करंटली आप जॉब के लिए जब ट्राई कर रहे हो तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लाइक जॉब ही नहीं है। प्रॉब्लम्स में तो एज ए ट्रेनी था तो मतलब इन डेप्थ वहाँ पे सिखाते नहीं थे, इसलिए तो वहाँ पे छोड़ दिया। हम्म, ऐसा था, क्योंकि वहाँ पे इन डेप्थ नेटवर्क्स का कुछ पूछते तो वो लोग कहते थे वो कॉन्फिडेंशियल है। ओके। सो करंटली हम्म। मेरे प्लेटफॉर्म में अभी मैं जस्ट करंटली जो देख रहा हूँ, मेरे पास राजकोट में ही दो रिक्वायरमेंट है। एक ड्यूरोप्लाई के लिए है, अगर आप मेरे साइट पे जाओगे ना और वहां पे लोकेशन के हम्म। जब सर्च करोगे, लोकेशन से सर्च करोगे, वहां पे मेरे को दिख रहा है कि राजकोट में एक ड्यूरोप्लाई के लिए रिक्वायरमेंट है, और एक बेलबास का रिक्वायरमेंट है। जो कि बेलबास क्या करता है कि बड़ा कंपनी है और वो बल्क में लोग हम्म। लेता है और डिप्लॉय करता है, तो उसका कस्टमर हमको पता नहीं चलेगा, बट बलबास का हमने शायद एक दो सेकंड आपको वो भी देख लेता हूँ कि उसमें नंबर भी दिया हुआ है। तो सरन्या बोल के लड़की है। बेलबास में मैंने अप्लाई किया था, बेलबास में ही किया था, हम्म। लेकिन वो ग्रेजुएशन कंप्लीट मांग रहे और बोल रहे कि अगर ग्रेजुएशन ना हो तो 13 years ऑफ एजुकेशन चाहिए, और हम देन फॉर ठीक है। 15 और 13। ओके, बलबा से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, अगर वो उनका रिक्वायरमेंट है या डिप्लोमा चलेगा। आपका डिप्लोमा है, राइट? यस। और ड्यूरोप्लाई में भी एक और रिक्वायरमेंट आया हुआ था एक, आपने वो देखा है क्या? हम्म, नहीं, यूरोप्लाई में नहीं दिखा। हाँ, तो आपका दो रिक्वायरमेंट वहां पे चल रहा है, राजकोट में ही चल रहा है, प्लस गुजरात में तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो हम्म। एंड स्पेशली अहमदाबाद में एक एसवीएन बोल के कंपनी है। मैं आपको चैट में लिख के देता हूँ। वहां पे आप एक बार ट्राई करो, बिकॉज हम्म। उनके एचआर से हमारा बात हुआ था। एसवीएन सिस्टेक बोल के कंपनी है। ड्यूरो प्लाई में रिक्वायरमेंट चल रहा हम्म। है। ये दो तो मुझे कल था, अभी याद है हाथ में। सब में प्लस सैलरी का इश्यू है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी सब में इश्यू है, इसीलिए तो ना। रेंज, अब अभी सैलरी का रेंज क्या है आपका? अभी मेरा 25 का है, मतलब पर मंथ का। ओके। पहले वाला प्रीवियस में जब ट्वेंटी फाइव। प्रीवियसली तो प्रीवियसली में तो 19 सीटीसी था, इसलिए। ओके, नहीं बट फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की थी, हम्म, इंस्पिरेसिस सॉल्यूशंस करके है ना। हम्म, वो ज्वाइन की थी, लेकिन उसमें वो हो रहा था कि उन लोगों ने बोला था कि विद इन 100 किलोमीटर्स का आपका रेंज रहेगा, उसमें जाना है, तो वो कभी 200 किलोमीटर्स भेज देते थे, ऐसा को बहुत होता था। फिर वो अलाउंस में फील्ड, थोड़ा लफड़ा था, हाँ फिर वो फील्ड, तो 1 वीक में ही छोड़ दिया था। वो फील्ड जॉब, मोस्टली फील्ड जॉब था क्या? हम्म। एंड फील्ड आपको जॉब था वो। आपको गुजरात में ही रहना है या फिर वहां से बाहर भी निकलना है, लाइक आपको भी राजकोट में ही रहना है? हाँ, मेरा ऐसा है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, साथ में मुझे एग्जाम्स देने जाना होता है अच्छा। हर 6 महीने में, हम्म। क्योंकि कुछ कंपनीज अलाउ करती है, कुछ नहीं करती है, ऐसा है। इसीलिए अभी तो गुजरात का ही प्लानिंग है। अच्छा। हम्म। ओके, अगर सो अभी गुजरात में भी कहीं पर भी हो हम्म, तो भी चलेगा। नहीं अभी मैं देख रहा हूँ कि गुजरात के अंदर में मेरे पास कुछ 8 रिक्वायरमेंट्स है जो कि चल रहा है, गुजरात में ही चल रहा है। और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है ओके। वो सपोर्ट के रिक्वायरमेंट है जो कि रिमोट भी है। तो पॉसिबली आप रिमोट सपोर्ट भी ले सकते हो, मे बी सैलरी उतना नहीं मिलेगा उसमें, बट एटलीस्ट क्या होगा, आपका जो बेसिक बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो क्लोज हो जाएगा। बिकॉज सर्विस डेस्क में जैसे कि एच डी एल इन्फोटेक हो गया, मैं आपको नाम पे पेश कर देता हूँ। वहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ चल रहा है।
एनीवे सिस्टम में तो दिख रहा है मेरे को कि रिक्वायरमेंट्स है, तो जॉब का तो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। ठीक है। इन हम्म, टर्म्स सैलरी क्या होगा हम कंट्रोल नहीं करते हैं, सैलरी एचआर वाला कंट्रोल करता है। तो आपको टेक्निकली कुछ ओके। लाइक स्किल्स में आपका अभी फील्ड सर्विस छोड़ के जो अभी नया इंट्यून का सर्विसेज आया हुआ है, M365 का सर्विसेज आया है, हाउ यू आर डीलिंग विद दैट? मैं जहाँ पे था वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। ओके। वहाँ पर मैं एज ए ट्रेनी था। वहाँ पे मैं हेल्प डेस्क में मैनेज इंजन है उसके सब टास्क देखता था, टिकट असाइनमेंट से लेके क्रिएशन तक। और आईटी सपोर्ट में सपोज यूजर का कुछ प्रॉब्लम हो, कॉन्फ़िगरेशन हो ईमेल का, फिर वो प्रिंटर्स का हो, या फिर मेल इश्यू है, वो मैं रिमोटली सॉल्व करता था। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था तो उसमें फिजिकली भी जाना पड़ता है। कुछ सिस्टम्स में डस्ट का इश्यू होता था इसलिए वो बंद हो जाती थी। मतलब वैसे टास्क किए हैं। फिर कंप्लीट यूजर कॉन्फ़िगरेशन हो, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो, ऐसा टास्क किए हैं वहाँ पे तो। ओके। साई, तुम्हारी साइड से कुछ इनपुट्स देना है क्या? साई। हाँ, सॉरी। साई, तो सो वी हैव टू पीपल आई थिंक। नागमलेश्वर विल बी Yes, sir. on. Good morning, You sir. morning. You will not understand Hindi, right? Yes, sir. You will Yes, sir. understand Telugu and English. Telugu and English. Okay. Yeah, So good morning. morning. Dhruv bhai, English थोड़ा सा okay है, right? English यस, okay, sir. Okay. यस। Sai issue Infotech का CEO है. He operates from Calcutta. But he knows the market. He travel all the way. Also, he is into now building some data center near Dhulera. So there is some contract is going on. So he's also working on that side. Sai, ओके। over to you. I think you have the ground of Gujarat as well as Telangana and Andhra. So your advice on that, please. Yeah, good morning, everyone. So, Good morning, sir. Dhruv and Nagam. I just call you by that for that your initial name. So, may I know that from that how many years you are in that industries? First is the Dhruv, Yes, around 7 months in IT industry. around 7 months. Okay, and for the Yes. Nagam, Sir, actually, I have completed my internship as a network engineer. okay, Now I am looking for a fresher role only. But I have real-time hands-on experience in intern, paid real-time internship. experience you have that. Okay, nice. Yes, sir. So, what are that industry you have worked for that? Sir, in that I have to monitoring the firewall, unwanted traffic, and we have to monitoring, analyze, and escalation the ticket to L2 team using the Okay. SIM tool and ETR. Okay. Nice, nice. So, in the sense, first, I just introduce myself. Myself, Saibendra. I'm from that Isho Infotech, and I'm running this my business last 4 years. Before that, I have also worked as for the like a 20 plus years in the industry. So I have worked the vertical industries like manufacturing, healthcare, for hospitality, then banking sector, insurance sector. I have worked for that. So my journey, it is through that, like for the desktop support, then desktop to that server, server to that network, then NOC, and then I have started my own. So 2022, I have started my own. That is my another journey on that. So initial stage that desktop support.
first you need to know that what is the desktop, why that end user, that is the most things that word is the end user issue. Okay, so we need to be solution for that end user problem. So first we need to understand their problem, what that is the problem first. So is maybe the hardware, maybe the software, maybe the somewhere that electrical issue, maybe somewhere it is having that. Because if the power supply is not coming to your desktop, so it is not going to power on. So see, sometimes why I'm telling that. So some of that person trying to start the button, power button in the desktop. It is not powering on. No, my system is not powering on. Even though they are not checked that power is the socket, is that power outlet, it is properly plugged in or plugged out. Right. So that is the things first. From there itself, we need to check that. How the power supply coming to the desktop. If that is fine, if that is the issue, no issue, then it is going to be on. So check the power outlet first. And that side. So maybe you are working for that on site, maybe you are working for that remote. So problem it is many things, right? Some person is reporting like the problem it is that application. So what's the application you are using? What is the source is coming that? Is that web application? Is that on-prem application? Or if it is a cloud application? So how it is installed there? So maybe it is that only installing the system itself, like that Office, our old Office, like Office 22 or 24. Some organization, they are using that old Office. Nowadays, we are using that O365. So that is totally cloud-based. So need to know first, the product first. What the product they are going to be used first. So if you know the product very well, you can support them very well that. Any kind of thing. So first things the product knowledge that, but technology knowledge, right? So like Nagam has worked for the network, right? Yes, sir. Okay. So I think network having the so many is the issue. Yes, I'm yes, not sir. getting the internet, not getting that that Google site not going to be open. My that on-prem that application is not going to be open. So maybe it is that first call it is going to be end user from it is logging to the case in their supported call ticketing system, right? So Yes, sir. mostly things the ticketing system. Why the ticketing system? If the end user is issue reported in that their issue reported in the ticketing system, then we get to know that. Even our manager also get to know that what is that issue. Okay, so that person is going to be Nagam has working on that issue. Okay, so once it is resolved, so as well as he going to be updated in the ticket, or as well as they are going to be updated in the their mail. Okay, so that what type of the issue and how it is come to that issue. So network may be the different, maybe it is in that local system itself, maybe it is in the switches, but maybe it is in that their port switches, but maybe it is in the firewall side, or maybe it is in that their ISP side, right? So how it is that network flow it is coming? Maybe that particular user is not going to be work. He is not reaching to the internet. Maybe that beside of the person, he can work on that. So I need to understand first. So where is that main issue? Maybe the cable is not punching properly. The Wi-Fi is not working properly. I need to check the ping, right?
I need to check the DNS, if the DNS is reachable or Yes, not. sir. Yes, sir. Sometime Yes, sir. also, antivirus also. Sometimes the antivirus blocking your systems, right? So those type of the things we need to check first, initial level. So A, B, C, then one by one need to be checked on that. So is maybe the VLAN issue, okay? Is maybe the firewall issue, some policy issue. What the site they are going to open that is already blocked, but the end user doesn't know that, right? So you're going to be open for this. So I need to know the first where is that issue. So as a desktop, for the desktop, like the printer is not coming that. I'm not going to print that, not able to print that. Then what is that issue? So maybe that printer port is not configured properly. Maybe that printer is not reachable due to the network. If it is that wireless printer, maybe some of the issue is the printer server configure. Maybe it is not going to be properly. So we need to check first, to understand first what is the main issue. See, in the industry, so many have that problem. In that, maybe that healthcare has actually healthcare domain is a different way. They're having the different protocol, right? The banking sector, they're having the different way. But all the people is working on the desktop, right? So end user, maybe that he's maybe the from that operation, maybe from that sales, maybe from that marketing, maybe that admin, anywhere. So desktop support engineer going to be help for them. So that is the thing first, we need to understand first how it is to be working on that. Right. So Dhruv, I think you have worked for the last 7 months, right? So what is that issue you have faced? Could you please share with us? Mainly issue there means वो in Hindi I can speak or Yeah, Hindi, Yes, Hindi yes, is yes, okay. definitely, no problem. आप हिंदी में बात कर सकते हो. ओके ओके तो उसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था तो डस्ट का इश्यू होता था तो सिस्टम्स बंद हो जाती थी ऐसा ही होता था मेनली फिर वो हम क्लीन करके रैम डायरेक्टली वापस इंस्टॉल कर देते थे तो वो हो जाता था और कुछ में वही इश्यू था क्योंकि पुरानी सिस्टम्स थी तो उनका यूटिलाइजेशन हाई जाता था इसलिए हम न्यू में अपग्रेड करते थे और कुछ बहुत पुरानी होती थी तो प्रोसेसर अच्छा था लेकिन हार्ड डिस्क है वो एंड ऑफ लाइफ थी तो उसमें एसएसडी अपग्रेड करके देते थे हम सो अभी मेरा ये चीज देखो, yeah, अभी जैसे कि आप बोले कभी कभी पुराना सिस्टम होता है, अपने हार्ड डिस्क आप चेंज करते हो, राइट? अभी हम्म उसमें पहले आपको देखना है वो जो आपका हार्ड डिस्क, जो आपका मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा. कस्टमर हम्म देखिए, कस्टमर कस्टमर नॉन टेक होता है, ठीक है? कस्टमर यस को समझाना है आपको, सर आपका मदरबोर्ड ऐसा है, इस जनरेशन का है, ये यहाँ तक ही सपोर्ट करते हैं. उससे आप M2 हम्म ड्राइव लगाओगे, स्लॉट ही नहीं होगा उसमें, हम्म है ना? लेकिन मेरे हाँ कस्टमर को नहीं कि मुझे M2 चाहिए. अरे सर M2 चाहिए, होगा, आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा. अभी मदरबोर्ड चेंज करना यस मतलब पुराना वाला जो ATX सिस्टम आता था अपना, ATX सिस्टम का तो हम्म आर्किटेक्चर अलग होता है, राइट? हाँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है वो. तो लेट्स सी ऑन दिस. तो मेरा एक कभी कभी जनरल डस्टिंग का प्रॉब्लम रहता है, टेस्टिंग का इशू हाँ रहता है, तो ये सब चीज देखने का हो जाए सर, तो मेरा राइट? हम्म सो तो आप देखो उसको, समझो उसको, देन वी कैन इनिशियलाइज दैट, वी कैन रिजॉल्व द इशू. ठीक है. यस मेरा दो तीन रिकमेंडेशन, आई थिंक आई हैव 2 or 3 रिकमेंडेशन. One thing, work on your skill. I think we have 10 minutes to go or 8 minutes to go. So one thing is work on your skill. See, desktop uh, support engineer work is changing because from physical work, what you're doing in manufacturing, if you go to enterprise, you have to think that it will change over there. Same thing for network also. Because nowadays, if you have 10, it's not 10 switches, right? It's 1,000 switches. There is also hub and spoke model, right? So you have to talk about a lot of
tools which can do things faster. So I have recommended something like Splunk log management. You have to do this free certification. So whenever you're free, do some kind of a learning. For Dhruv, it will be like Intune, and MS365 will be the next generation technology, because every laptop nowadays is managed through the Intune portion. Second thing, you also need to see कि patch management कैसे होता है, right? Both for you as well as for Naga, it's the patch management through some kind of software, not through manually going into the system and upgrading their firewall firmware and things like that, because that solves a lot of issues over there. Third thing, regarding the job, what I'll recommend, please update your resume very properly. Use a bit of chat GPT. Don't go more than 2 pages. Maximum 1 pages for a fresher. But add how much you have worked. Small thing. Think about it. You worked on a project. You worked for a friend. Tell that you have worked for a small firm with these kind of things. So what happens? People get a confidence on that. Join, apply for, you're applying, so applying also should be disciplined. You should not do the application of the job every day 24/7, or the whole day. What you do, specify 1 hour in a day. Before sending a mail, send a good cover letter saying that I am this and this, I did 5 bullet points, this is my area, and then apply. So what happened, people see how clean is your resume. पहला impression वहीं पे आता है कि resume is good or not. If your resume is clean, right, with 1 pager only, every information is given, that does your job 100%. So out of 10 people, 9 people go out because the resume is not clean. Second thing, people look for you in LinkedIn. नौकरी में इतना नहीं होता है, LinkedIn they look into. So please update your LinkedIn with good banner, good content. सब कुछ डाल के आप रेडी करो. पीपल सर्च, लाइक जब जब HR पैनिक में होता है ना, वो सर्च करता है और सर्च में आपका नाम आना चाहिए. There is something called as resume ATR and enhance CV. I think there is one tool called enhance CV, and LinkedIn score is there. So just search for LinkedIn score and improve your scoring. So when you are free, 1 hour you apply for job, 30 minutes you improve your ATR score and LinkedIn score, and then you apply for the jobs. That is where the things will happen. We put around about 8 or 9 jobs per day across, and don't only try for the physical job, also try for remote jobs, which will give you some leverage to do some other things also for your learning, things like that. And at least learn one technology per 2 month minimum. These are some of the tips are there which you have to follow. Dhrubai and Naga, I am sure you are good guys. I'm not able to see your resumes in my system. I think I'm not able to search about that. Maybe you have applied long back. I need to Sir, I search on already that. updated, sir. I already sent it to mail to HR. Yeah. So you Hello, in your sir. platform you apply directly, right? You apply and it will go to the HR directly. There is nobody in the middle. And then we talk to HR once there is Ah, 10 application or more than 10 application. So what happens? We also add value, right? And then we'll tell why don't you take our people over there. So we recommend on that way, or we refer. So mostly our platform is mostly on the referral okay, thing. So what I'll recommend is something, but you keep applying, okay, keep okay. looking for things, but also improve your resume. I'll check your resume. Possibly I'll send a note to you from my side personally, saying that what I felt about your resume, things like that, just to improve. And Okay, okay. Dubai, I have given Thank you. you some Ahmedabad contacts also. I think SVN से आपने बात किया, मैं भी SVN से बात करता हूँ. मेरा HR के साथ कनेक्ट है. I'll talk to राजेश. I think सिस्टम में राजेश बोल के बंदा है. उनका ही नंबर दिया हुआ है वहाँ पे. उनसे वो बात कर लो, एक बार वापस बात कर लो मंडे को. ड्यूरोप्लाई अप्लाई में मेरा इतना कांटेक्ट नहीं है. हाइपरलिंक में मेरा कांटेक्ट है. इम्पैक्ट में कांटेक्ट है मेरा थोड़ा सा. आई विल हेल्प यू टू. हाइपरलिंक में ऐसा है आप पैसा नहीं कि देते. वहाँ पे पुराने जो एम्प्लॉयज हैं उनका वर्किंग रिव्यू अच्छा नहीं है और सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत है वहाँ पे. अच्छा. नहीं देन आप अपना हिसाब से हाँ. देखो, चूज करो. इम्पैक्ट में भी है हम्म. तो आप एक बार ट्राई करो. जो हो सकता है हम भी ट्राई करेंगे एक बार. आपका डिटेल्स है हमारे पास. तो लेट्स सी विद अ ओके. मंथ विल सी वी कैन हेल्प यू इफ ओके. यू एबल टू हेल्प यू, राइट. बट मैं यस. आज एक काम करता हूँ. आज शाम तक मैं रिज्यूम देख के आपका बेसिक लिंक्डइन वो सब सर्च करता हूँ. इफ यू आर एबल टू अपडेट योर लिंक्डइन एंड नौकरी एंड एवरीथिंग,
and resume also. Update please मुझे start ऐसा updating. है, नौकरी.com में से बहुत कॉल्स है, फिर मैंने अप्लाई भी बहुत किया है, लेकिन मोस्ट डेफली ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, फिर थोड़ा सीटीसी में थोड़ा होता है वो, यू ऐसा कैन है। नॉट डू, हाँ आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, क्या हो जितना कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है जो है उसी में है। सी हमने हम्म, हमने भी डिप्लोमा ही किया हुआ है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। हम्म, बाद में हमने उसको हम्म। अपग्रेड किया, राइट, बी के लिए किया, तो वो पढ़ाई तो चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कॉर्पोरेट में काम हाँ करना है मैं तो चाहिए, तो दैट्स ओके। हाँ मैं बी में ही हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि कंप्लीटेड चाहिए। कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट चाहिए। ठीक है, लेट्स कनेक्ट बैक। आप मेरे साइट पे आए, आप लोगों ने यूज किया है, आप कुछ फीडबैक रहेगा तो आप पास करना। एक्शन फॉर मी, आज मैं रिज्यूम देखूंगा, एंड अगर मेरा साइट से कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्टैक्ट्स होता है, इफ यू आर एबल टू हेल्प यू पर्सनली or as a referral, we will certainly will do it, but we are putting around about 8 to 10 jobs per day on different platform. हमारा टारगेट ही 24 jobs पर 1 hour 1 job काइंड ऑफ टारगेट है। हमारा एआई प्लेटफॉर्म स्क्रैप कर रहा है, तो हम लोग उसको ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा और अच्छा इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करते रहो, जहाँ हो सकता है हमसे हम जरूर हेल्प करेंगे आपको उसमें। ओके। Sir, I already sent it to mail to HR and I already update in portal, sir. But Yeah, so till now I apply through didn't the get portal, any don't response. send a mail, directly apply through the portal. Our portal is good enough to send the mail to the HR directly. Okay. Portal also I applied, sir. Yeah. So we'll see how we can help you. We'll see on that one. We'll try to get you something. Yeah. This one only, sir, jenkoti.com. Yeah, that's the one. And also complete some certificates. Huh? We have free certificates also. Complete that. Please, where, sir, in flat